जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारे नूं इस शाम दे प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत। अज मैं तुहाडे लई एक बहुत वधिया प्रोग्राम लैके आई हाँ बिकॉज अज दे प्रोग्राम दे विच इन अ रेयर अकरेंस कुछ गुड न्यूज़ असी शेयर करन जा रहे हैं। यह न्यूज़ सानू सारियां नूं अफेक्ट करदी है, साडे सारियां लई चंगी खबर हैगी एंड होपफुली इज़ इंडिकेटिव सानू अंदाज़ा दिंदी है कि आने वाले समय दे विच चीज़ां सही डायरैक्शन दे विच अगे वध रही हैं। जदों प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन 90s दे विच कैंपेन कर रहे सी, उन्हां दे एड्स कैंपेन एडवाइजर्स उन्हां दे नाल सी ते एक बहुत फेमस कहावत उस टाइम कही गई सी जदों प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन तो पूछा गया सी दैट व्हाट इज़ द वन थिंग जिहदे करके कि एक कारण हैगा जिहदे करके तुसी इलैक्शन जित्ते हो, तुसी जित सकदे हो, तुहाडा सक्सैस पॉलिटिक्स दे विच इन्ना वधिया रहा है। तो उन्होंने एक बहुत फेमस कहावत कही सी, इट्स दी इकानमी स्टूपिड, कि होर चीज़ां एक तरफ है बट जिथे तक मेरे सक्सैस की गल आती है ऑफ कोर्स इट्स दी इकानमी। यह ट्रेंड असी बार बार वेख्या। अगर तुसी प्रेजिडेंट क्लिंटन तो पहले वेख लो, रोनाल्ड रेगन वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज इकनॉमिक पॉलिसी। इनफैक्ट रेगन वॉज सो वेल नोन कि शायद तुहानू पता होना है कि रेगनॉमिक्स एक पूरी टर्म ही बन चुकी है जिहदे बारे अजे भी गल हुंदी है। ट्रिकल डाउन इकनॉमिक्स के तुसी सारे तुसी कह लो रिसोर्सिस उत्ते पा दिओ एंड दे विल ट्रिकल डाउन इनटू सोसाइटी। अपर मिडल क्लास अपर क्लास नूं तुसी सारे तुसी कह लो टैक्स ब्रेक्स या इंसेंटिव्स या फाइनैंशियल बेनिफिट्स दे दिओ ते वो जरूर अपर मिडल क्लास लोअर क्लास तक पहुंचणगे। ट्रिकल डाउन दैट वाज रेगनॉमिक्स। उस तो बाद फास्ट फॉरवर्ड to 2016 जदों प्रेजिडेंट ट्रंप इलैक्शन जिते। प्रेजिडेंट ट्रंप दे अपने पहले 2 साल कोविड तो पहले उन्हां दी टेन्यूर दे एडमिनिस्ट्रेशन दे पहले 2 साल इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग सी। आई मीन इट वाज डूइंग वेल। इनफैक्ट हजे भी अगर प्रेजिडेंट ट्रंप बारे भावें जो उन्हां दे विरोध की भी गल करते हैं वो एक चीज़ मनते हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप दी टर्म के पहले 2 सालों के इकोनॉमी बहुत वधिया चल रही सी। एंड इनफैक्ट की पता अगर कोविड ना होया हुंदा कि शायद वो फिर प्रेजिडेंसी जित जाते। इन एनी केस कोविड होया, ग्लोबल इकोनॉमी टैंक की ते प्रेजिडेंट बाइडन नू उस कुर्सी ते बैठन का मौका मिलिया। प्रेजिडेंट बाइडन जदों वाइट हाउस विच आए, इकोनॉमी के तौर पर अगर असी वेखीए बहुत माड़ी हालात सी, ना कि सिर्फ USA की पूरी दुनिया की माड़ी हालात सी। एंड उन्हां दे इन पिछले 3 सालों दे विच पोस्ट कोविड रशियन यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन क्राइसिस, चाइना दे नाल किन्नी टेंशनस, ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इन सारी चीज़ां दे तुसी कह लो अपहीवल तो बाद फाइनली इस जून दे विच जाके कुछ गुड न्यूज़ सानू मिली है। इनफैक्ट द लेटेस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स, जून दे इन्फ्लेशन नंबर्स दसदे है कि इन्फ्लेशन थल्ले आ रही है। इनफैक्ट 3% ते इन्फ्लेशन नू रिपोर्ट किया गया है जो कि इन्ने घट इन्फ्लेशन के नंबर्स जून 2021 तो नहीं वेखे गए। एंड ऑफ कोर्स प्रेजिडेंट बाइडन जो कि इन नंबर्स नू लैके कल सारी अपनी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे सी, खुशी खुशी उन्होंने कहा गुड जॉब्स, लो कॉस्ट्स, दैट्स बाइडेनॉमिक्स इन एक्शन। इनफैक्ट प्रेजिडेंट बाइडन ने आप दी अपनी टर्म इत्थे कॉइन की है बाइडेनॉमिक्स एंड ही इज़ शोइंग कि किस तरह जो इस वेले इन्फ्लेशन के नंबर्स दसदे है कि यह प्रूफ है कि मेरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी कम कर रही है। कि जो सारे क्रिटिक्स सीगे, जो सारे विरोध विच खड़े हुए सी, उन्होंने जवाब देंदे हुए बाइडन कह रहे हैं जस्ट लुक एट द इन्फ्लेशन नंबर्स,
And let's look at these numbers. अगर तुसी अगली स्लाइड विच वेखो, यह जून दी इन्फ्लेशन रिपोर्ट सानू दसदी है कि किन्ना डाउन टर्न आया है उन नंबर्स दे विच। तुहानू याद होना इन्फ्लेशन एट इट्स वर्स्ट was 8 almost 9%, जो कि बहुत ही एक devastating scenario हैगा। 3% ते पहुंचना, that is pretty standard, globally recognized average number inflation ਲਈ। And this isn't the only data जो कि कल दी रिपोर्ट दे विच सानू मिलिया। In fact, अगर असी होर ग्राफ्स नू वेखिए, इन्फ्लेशन सब तो तुसी कह लो जून 2021 तो सब तो घट इस वेले पाई जा रही है। So this you can say is the true post-pandemic economy। खास करके हजे भी असी रिसेशन दे विच officially नहीं पहुंचे। economic experts ये कह रहे कि इस तरह इन्फ्लेशन नू इन्ने थल्ले लैके आना without a crushing recession, ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी गल है कि Jerome Powell, chairman of the Fed, ने भावें सानू सारियां नू एक बहुत कौड़ी दवा दिती है रेट हाइक्स दे नाल पिछले किन्ने महीनों तो, बट ओदा फायदा देखो की हो रहा है, ओदा रिजल्ट so far so good। And there's some other data जो कि जिथे तक रिसेशन की गल आती है सानू दसदा है कि yes, there is data जिहदे मुताबिक इस वेले रिसेशन ऑलरेडी होना चाहिए है, but the economy isn't showing that। जो लोकां दी डे टू डे स्पेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं या कंसूमर कॉन्फिडेंस की जदों गल आती है, उन सारे मैट्रिक्स नूं जदों वेखो रिसेशन नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स दे बलबूते उत्ते रिसेशन ट्रेडिशनली कैलकुलेट किया जाना चाहिए, लाइक दिस यील्ड कर्व फॉर एग्जाम्पल, ओह सानू दसदा है कि रिसेशन होना चाहिए। मे बी this metric needs to be re-examined because look at how much the price of things has dropped। खास करके जदों असी कुछ एरियाज दे विच प्राइसेस दा डिक्रीज वेखदे हां, तुसी अगली हेडलाइन विच वेखो, खास करके एयर फेयर दे विच। Now this is indicative of a larger picture, right? Airfare ता एक सिर्फ एरिया हैगा जिहदे विच कितना significant drop रहा है। जिस तरह तुसी स्क्रीन ते वेख सकदे हो, यह जो बार हैगी लेफ्ट साइड ते डिक्रीज प्राइसेस दा सानू दिखांदी है। जो सब तो थल्ले वाली बार है दैट्स डोमेस्टिक एयर फेयर, जो कि ऑलमोस्ट मई टू जून दे दौरान ऑलमोस्ट 18-19% डिक्रीज होया है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट प्ले इनटू दैट, एंड उन फैक्टर्स करके असी कह सकते हैं कि चीज़ां सही तरीके दे विच जा रही हैं। इनफैक्ट अगर तुसी एयरलाइन इंडस्ट्री में देखो, मोर पीपल आर फ्लाइंग, भावें वो वेकेशन होए, भावें वो बिजनेस ट्रैवल होए, एंड डोमेस्टिक ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल ज़्यादातर होंदा है। एयरलाइंस जिन्हां ने प्लेन्स खड़े कर दिते सी, आप दे एम्प्लॉयज़ नू फायर कर दिता सी या फरलो कर दिता सी, ਉਹ ਹੁਣ रीहायर कर रहे हैं, आप दे प्लेन्स नू फिर यूसेज विच पा रहे हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग अप। Now this doesn't mean कि हर एक चीज़ एकदम ओदा प्राइस 2-3 साल पहले वांगू हो जाऊगा। नो, कई एरियाज़ दे विच हले भी टाइम लगना है, कुछ महीने तुसी एक्सपैक्ट कर सकते हो जब तक इन नंबर्स दा रिजल्ट तुहानू अपनी वॉलेट ते अपने बैंक अकाउंट ते महसूस होए, तुहाडे वीकली या मंथली खर्चियां दे विच महसूस होए, बट द डेटा इज़ शोइंग अस अ गुड ट्रेंड। एंड ऑफ कोर्स जिथे प्रेजिडेंट बाइडन अपनी इस पॉलिसी बाइडेनॉमिक्स नू लैके काफ़ी खुश हैं, काफ़ी तुसी कह लो दुनिया कंट्री नू वोटर्स नू दस रहे कि कितनी सक्सैसफुल उन्हां दी स्ट्रैटेजी रही है। कई लोग इन्हां दे विरोध दे विच भी बोल रहे कि बाइडेनॉमिक्स इस स्ट्रैटेजी दे विच हले भी कुछ कमियां हैं। इनफैक्ट जेमी डायमंड ऑफ चेस बैंक, उन्होंने आप कहा है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ बाइडेनॉमिक्स, के मेरे तो पूछो I would like Diamondonomics। And others have said कि President Biden दा focus industry ਅਤੇ infrastructure ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ outsize level ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, and ਇਹ focus ਬਗੈਰ ਇੱਕ larger economic strategy ਤੋਂ
it's setting him up for failure. So what does it all mean? खास करके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Bidenomics, it's नवी term ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, in numbers ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's very very good कि inflation ਹੁਣ ਇਸ level तक पहुंच चुकी है, but long term ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ? Once again ਤੁਹਾਡੇ bank account ਤੇ ਅਤੇ overall country ਦੀ economic outlook ਉੱਤੇ। लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा सानू दसदा है कि जून दे विच इन्फ्लेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली लोअर हुई है। इन फैक्ट दिस इज़ द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट वीव हैड सिंस जून 2021, ईवन दो आम लोगों लिए, एवरेज अमेरिकनस लिए हले वो चीज़ महसूस नहीं हो रही जो लोग ग्रोसरी स्टोर या गैस पंप ते जाते हैं, बट द economics behind it is showing a positive result of all of the action the Fed has taken. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इन लेटेस्ट नंबर्स की गल करते हैं, इन्हों के पिछे जो economics है खास करके जिथे तक ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਮੀਤਾ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਡੈਕੇਡਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਸ ਯੂ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦਿਸ। ਵੀ ਲਵ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ। Nirmal ji, you know, this is good news, right? President Biden kal kafi jor shor de vich ek, you know, winning spirit de vich unhone statement ditti that good jobs, lower costs, that's Bidenomics at work. So let's, before we get into that, talk about the overall inflation data. Eh jo numbers han, eh sanu large picture ki dasde hai? Yeah, definitely. Jida tusi mentioned kita Aasmeeta कि about 2 years ago, cut ही, but in last few years it went all the way up with 8.7 inflation rate, which is totally one of the worst we have ever seen for all last 40 years. So coming back to 3%, which is very normal. Generally, 10% inflation is acceptable toward the world economies. And this is definitely working. And whatever they did, I think one of the major significant factor in this whole thing is ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਫੈਡਸ ਨੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਵਾਸ the option they knew ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ how to control that inflation, but during this changing dynamics of economies and ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ I think this is still working and this is very positive sign. So ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ overall spending power ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ because they're still making same kind of money and ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ already ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. I mean, if you go to gas pump, I think here in California gas is about $1 cheaper than last year. Even a carton fag is about $2 to $3 cheaper than last year. So things are getting better. I think it's more affordable for average middle class. Ji, you know, if we break down into some of this data, जो ये numbers बरीकी दे विच कुछ चीज़ां दस रहे सानू, खास करके जिन areas दे विच prices डिगे है, right? So let's look at airfares as kind of a measuring stick, right? Because airfares जो COVID तो बाद rebound ते हैगे, they're doing well. People are going on vacations again. लोग की travel कर रहे खुले तौर ते, domestic, international. Airfares domestically have gone down. So ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ for example ਇਹ graph ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, the lowest bar at the very bottom of that graph shows कि airfares किन्ने drop हुए, it's almost 18-19%. So overall ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ consumers ਅਤੇ spending trends ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, do you feel that there is some lag time कि अगर जून का डेटा सानू दसदा है कि इन्फ्लेशन हुण 3% तक पहुँच चुकी है, when do people start feeling that in their bank accounts, in their wallets? जो लोगों दे पिछले साल, 1.5 साल, 2 सालों तो spending trends रहे हैं, उन्हां दा change होने दे विच कितना क time तुहानू लगदा है लगूगा? देखो, at some level, or definitely already change हो चुकी है because we are particularly talking about inflation, so we're not talking about the consumer spending at this point. So ਜਦੋਂ ਉਹ data, which is more, it's that when that data comes up, probably we'll see that there as well.
So on average, I think the lag time ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ quarter ਦਾ lag time ਤੇ ਆਪਾਂ we can consider that and we can take that in picture. You're talking about ਕਿ ਜਿਹੜੇ domestic travel ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ airfare prices ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਨੇ. Definitely they are gone down because after ਤੁਹਾਡੇ COVID ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ. So I think, and there's another factors which is contributing to this as well, because all the necessary travel which was done by most of the businesses, because still there are domestic, that the major chunk of the travel is business travel. That can, that has been accommodated by, all over, Skype, back in the day, we used to do all shoots in the studio. So this is also contributing to this. So there's technologies coming into picture as well. So, so getting back to your point, I think probably by the end of next quarter, we'll see all that the data I'm expecting, consumer spending, the key as time structure. And I think the timing couldn't be better, right? Because as during President Clinton's era, just what's the key to winning the election? It's the economy, stupid. So with President Biden, कई लोग ये भी कह रहे कि शायद जो ये economic outlook हैगी या voters दा perception है economy बारे ओहो उना दी re-election chances नू शायद सब तो ज़्यादा affect करदा है. And part of that is the decisions that the Fed is taking, right? So हर एक वारी जो तुसी साडे नाल जुड़े हो सी Fed दी rate hikes बारे गल कीती है. It's been a painful conversation because even though एक मतलब कौड़ी दवा सानू सारियां नू लैनी पै रही है, no one likes taking that, and that does make people feel bad about the person in charge, right? Decreasing their re-election chances. So अगर असी Fed दी गल करिए हुन, clearly what they're doing is having a positive impact. आने वाले समय दे विच, do we see more of those rate hikes? Do we see some change in the Fed's behavior? थोड़े ख्याल Federal Reserve Jay Powell वालों की अगले कदम असी expect कर सकते हैं? जी, definitely. I think coming to your first point, economy and election, and if you go back to the last presidency of Donald Trump, his only strong point is, meri economy, and this, everything else is, all haywire. This is the only thing he was concentrating on. Okay, economy bahut better kar rahi hai. Now, it's under his watch, economy inni cripple ki thi, inflation inni badhi. So Biden came over and took over the economy, and then he just literally turned it around and inflation control karni. So that was the biggest challenge. I think still a lot of other countries, Western countries, Germany, UK, they are still, they are going into recession. So this is very soft landing. We really didn't go into recessions. We are coming out of inflation. Generally, recession that is good for economy, good for inflation. उस करके बगैर recession तो inflation को control करना, that's really commendable. Now, I'm sorry, I lost your second question. You're talking about the Fed rates increase. Feds, even this is coming in control. I think there's a next meeting in probably next 2 weeks. In Fed's meeting hai. So I anticipate they're still going to increase the rate by another 0.25%. And then meeting after that is probably September. Because things are working right now, so they don't want to break that momentum. So I think they will keep that momentum. Instead of increasing it to 0.5%, they'll probably increase it 0.25%. So that's not a huge impact on the economy. It will not push into recession, but still keep the things in checks and balances. So at least for the next 3 or 4 months, the things will be in control. I believe even in September, we'll see how the reports are, but even in September, there are good chances that they will increase it. There'll be another rate increase. After that, I think it's too far-fetched. It's difficult to predict. But on wale dina de vich, apan definitely dekhanga ke rate jehde hai, wo ek ya do bari aur bathi. And once again, some reporting is saying that shayad July the rate hike last ali hoye, but certainly there's alternative reporting and data to show, just na tusi hune kya hai, कि यह जो momentum है
ਉਹ momentum ਨੂੰ carry forward ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. We will see that going into the fall, which is once again an interesting time for the economy overall. ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਾਂ extra disposable income ਹੈਗੀ, going into the fall, into the holiday season, that money will no doubt end up back in the market, in the economy. So this is a good thing to see. I want to talk about ਇਹ ਜੋ ਨया ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, Bidenomics, what it means, is it actually working? ਜੋ President Biden ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹਨ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਦ 80s, ਕਾਫੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਹੈ, which is known as Reaganomics, trickle down economy, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, they will no doubt make their way down to the rest of society, so to speak. ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ called Bidenomics. And President Biden ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ essentially ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਆਫਟਰਮੈਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ economic fallout ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ. But does Bidenomics actually work? Let's learn a little bit more about the science behind it, the economics behind it. Nirmal ji, once again, welcome back to the program. Bidenomics, made up word, just like Reaganomics, but ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕਲੀ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Republicans and certain folks in the market are saying. The most notable critic right now is Jamie Dimon of course, Chase Bank. And he's saying, forget Bidenomics, mere ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ Diamondonomics ਮੈਂ propose ਕਰਦਾ. So everybody is jumping on this train. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ, is this current inflation report, this data that we're seeing, is this proof of Bidenomics in action? Is it working? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ attribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Well, so far, Aasmeeta, if you look here, so far so good. I mean, at least for now, it's working for him. Jo bhi inhone kita, the biggest money they're spending on green energy and that infrastructure projects. So that is definitely working because technically we're out of inflation, and that too without any recession. In a recession, then all inflation se nikalna, it's fairly simple. That's it's very workable. Lokon ko paise hi nahi katan ho, to kida katenge, and things will get cheaper. Now people have jobs, they're working, and then I think it's definitely working. I believe the actual confidence of all those people who are behind Biden. There was a biggest concern when President Biden got elected, that the economy was really great for first 2 years before the COVID hit under Trump. But how Biden will sustain it, so it's doing better. We're not losing jobs, and it's called it's in technical terms, in financial terms, called a very soft landing. So it can't be any softer than this. So it's definitely working. I don't see any reason at this point it won't work for next coming months. Gee. Another criticism जो कि इस Bidenomic strategy वाल level की जा रही है, and once again, like you said, a lot of the spending is this big industrial spending, this green, clean energy spending. The CHIPS Act is a big part of it, जो कि President Biden की signature legislation रही है. Some people say कि इन्नी ज़्यादा spending सिर्फ industrial areas दे विच without a larger economic strategy is like setting yourself up for failure, right? So इस तरह दी criticism पिछे की logic हैगा? Do you feel that जो President Biden da focus infrastructure, industry, energy, the areas de vich हैगा, that is holding him back from a larger economic strategy, or do you feel that he can build the larger economic plan on top of the foundation of this industrial policy?
Well, if you go back, if you look at this inflation, I think the biggest gain we got of all this is jada sab to zyada break mili inflation there, which is definitely in energy industry. The energy is the one which is much cheaper than a year or 2 years ago. Baki cheezaं jadiyan, if you look at the service industry, ਉਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ inflation ਹੈਗੀ ਹੈ, and I think there are multiple reasons because service industry is not directly related to the interest rate hikes, and service industry is so coming back to energy. So energy is and coming years and decades, energy is there's a demand for energy which no country can cope up with. And Republicans always, their quick fixes, okay, offshore drilling karo, drilling karo, more drilling, and definitely because Republicans are not really winning any elections for last few terms. They have won some, but not the way they should be because they still are in a pretty bad shape. So they really want this economy to at least see the economy go in drain. So J economy fail hundi hai, that's the only chance they will win because there's no other aspects where you can put Biden in a bad situation. So economy that's what they've been talking over and over again, and they are still talking, this is short term. Well, it's working in short term. We do not know. Nobody knows what's going to be long term. It's too far-fetched to decide ki aaj to 10 saal baad ki hona. But things are working as of now, and I don't think that will change in coming months. Yeah. And that is something which is not desirable outcome, at least for the Republican Party, because they don't have anything to put in front of their voter base. We are better than them because they are not really at this point in any sense. Ji. Nirmal ji, I completely understand when, as a expert on the economy, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but one thing is for sure, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, that we will as a global society need energy, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, and to invest in clean green energy is the long term, the only long term solution. So it seems like a safe bet. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ politics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, of course domestic जो भी narratives दोनों parties ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, that's one thing, but we cannot ignore कि ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ geopolitics ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ connected ਹਨ. I mean, just last week Treasury Secretary Janet Yellen was in China. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ discussion ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, what that means, that economic dialogue, ਉਹਦਾ restart ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ in tense relationship ਦੇ ਵਿੱਚ. One of the areas they talked about collaboration, of course, in addition to जो sectors they कुछ पाबंदियां लाई गई हैं, like artificial intelligence. One area जिथे मतलब दोनों दी सांझ सी, that was environmental policy, right? So whether it's the restrictions or the openness between China and the US when it comes to technology or the environment, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਜੋ recent meeting ਰਹੀ ਹੈ and these developments, how do they affect President Biden's domestic agenda when it comes to the economy? So I think I'll come back to the same point. I think so far, China got their own problem, and they got a pretty big problem. So between them and Japan and a lot of other companies and all the Western society looking an alternative to China. People are moving to India. So they have their own problem, and at this point I think they also need this dialogue. This is a mutual dialogue between China and US. It's not that the US ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. They need this dialogue more than anyone else, and there's definitely ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ mention ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ collaboration ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ industry ਦੇ ਵਿੱਚ. I mean, there's a big collaboration going between US and China, especially in these electric cars. So any technology jadi ho rahi, I think that's probably going to ease up. But still a lot depends on how we end up, when this war is going to be over between Russia and Ukraine. So that is also one of the factors, because that can also decide ki Taiwan, the China, the situation ki hundi hai. And India, I mean, if you come back to this, India is really getting a lot of this. I think this is a good opportunity for India in every aspect, from political, from economical perspective,
So India is in a very strong position. They are definitely facing a win-win situation, sari tarfon. But once again, you know, I think the final word on this Bidenomics situation is so far so good. Tusi sehmat ho is cheez de naal, so far so good. Other thing which we forget to mention, you know, even though inflation control aa rahi hai, par jehdi wages growth hai wo bhi nahi ho rahi. So that's very important, because jadon wage growth hone lag pendi hai, if you talk about UK, one of the wage growth is about 7 to 7.7%. Wow. So the wage growth karni pendi hai, that's also a burden on economy, because jada wage denli you have to increase the price of goods and services. So that is not there. So we are this inflation is under control, and that too without those wage growth and without recession. So this is beautiful thing. This feels like too good to be true, but this is really good. Yeah. This is good. Well, there's definitely good news indeed for the economy, and kudos to Jerome Powell at the Federal Reserve. Aj de program de vich tuhadi in insights lay tode timely. As always, Nirmal ji, a big thank you. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thank you. So, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ emerging industry disrupting technology ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। artificial intelligence ਦੀ ਜੋ growth ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ growth ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ outsized portion rest ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ। OpenAI, Open Artificial Intelligence ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ChatGPT, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਚੈਟ ਬੋਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ, ਵੀਡੀਓ, ਸੌਂਗ, ਪਿਕਚਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ChatGPT, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਰਡ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Certainly, it is changing the industry. But ਦੂਜੇ ਬੰਨੋਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ inherent risks ਵੀ point out ਕੀਤੇ ਗਏ। In fact, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗॉडਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, left his job. Of course, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, but he left his job specifically to make a statement ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ChatGPT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ OpenAI ਦਾ CEO ਹੈਗਾ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। Well, there's a new update in this story. Sam Altman, CEO of OpenAI, जिन्हां दा वड्डा product ChatGPT हैगा, is now part of a investigation by the Federal Trade Commission. In fact, जो FTC हैगी, उन्हां ने यह investigation कुछ दिना पहले ही launch कीती है, claiming that जो data ਤੁਹਾਨੂੰ ChatGPT ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ChatGPT ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ FTC ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟ GPT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ कभी कभार अक्सर ये चीज़ असी आप भी एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस की है अक्सर वो इन्फॉर्मेशन 100% करैक्ट नहीं होंगी खास करके जो किसी इंडिविजुअल बारे तुसी कुछ सवाल पूछो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट GPT में जाके पूछा आशमिता JUS TV दी एंकर कौन है वो मैनू लंबा चिट्ठा लिख के जरूर दिंदा है बट उस लंबे चिट्ठे दे विच अद्धी चीज़ां मेरे बारे गलत सीगियां ये मैं आप एक्सपीरियंस किया सो सर्टनली द टेक्नोलॉजी हैज़ रूम टू ग्रो इंप्रूवमेंट लिए जगह हैगी बट जो FTC दी यह इन्वेस्टिगेशन है वो अलेज करती है कि यह जो मिस इनफॉर्मेशन हैगी यह कंसूमर्स नू खतरे विच पा रही है मिसलीड कर रही है मिस इनफॉर्म कर रही है गलत जानकारी दे रही है इनफैक्ट FTC दी जो करंट चेयर हैं लीना खान शी इज़ नोन एज समवन जो कि FTC नू एक प्रोएक्टिव अप्रोच ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੋਰਮਲੀ ਦ FTC ਵੇਟਸ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਓਨ WhatsApp Instagram Facebook's new Twitter rival ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ Threads ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਟਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ FTC ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਪਰਪਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਡੇਟੇ ਨੂੰ Facebook या Meta एक थर्ड पार्टी कंसल्टिंग पोलिटिकल कंसल्टिंग फर्म नू बेच रही सी द नेम ऑफ दैट फर्म वाज Cambridge Analytica द रीजन आई मैंशन दिस इज़ बिकॉज ओहो जो लॉसूट ओहो जो केस FTC वालों Meta के खिलाफ आया सी इट हैपेंड आफ्टर बहुत साल बाद उन्हां दी गलती करन तो बाद वो केस आया सी बट अज जो इस FTC केस की अहमियत मैं तुहानू दसना चाहती हाँ ये टाइमिंग की अहमियत वो यही है कि FTC अलॉन्ग विद सैम ऑल्टमैन जिन्हें आप यह प्रोडक्ट क्रिएट किया है जो करंट एदा फॉर्म असी जानते हैं जो इस प्रोडक्ट का गॉड फादर है जिन्होंने इन्वेंट किया 70 साल का बजुर्ग वो ये सारे ही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच पोटेंशियल बहुत है बट खतरे उस तो भी वध हन कि इनू रेगूलेट किया जाना चाहिए इनू स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए तीखी नज़र दे नाल इनू कॉन्सटेंटली ट्रैक करना चाहिए बिकॉज अगर इनू असी खुला छड़ दिता द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ दैट इट एंड्स ह्यूमैनिटी एंड उस तो अगर तुसी कहो कि चलो वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है मिड लैवल बैड सिनेरियो की हो सकता है वो जस्ट लुक एट नेक्स्ट ईयर अगले साल एक फैडरल पोलिटिकल इलैक्शन होने जा रहा है प्रेजिडेंशियल इलैक्शन होने जा रहा है एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इलैक्शन एंड जिस तरह असी 2016 के इलैक्शन दे विच देखिया सी वेयर इट वाज फॉर्मर प्रेजिडेंट ट्रंप वर्सिस कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन कुछ साल बाद पता लग गया कि सोशल मीडिया का कितना वड्डा तुसी कह लो प्रभाव रहा उस इलैक्शन नू स्वे करन लई कि किस तरह सोशल मीडिया अते इहो जी टेक्नोलॉजीज़ नू मैनिपुलेट किया गया बैड एक्टर्स वालों यह साबित किया गया US की अपनी सिक्योरिटी एंड लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ वालों कि रशियन बॉट अकाउंट्स जो कि फेक अकाउंट्स सीगे वो अमेरिकन अकाउंट्स बन के लोगों नू भड़का रहे सी डरा रहे सी लीडिंग अप टू द इलैक्शन सो दीज थिंग्स आर ऑल प्रूवन एंड लीडिंग इन टू नेक्स्ट ईयर्स इलैक्शन सैम ऑल्टमैन जी तस्वीर तुसीं देख सकते हो फ्रॉम द हियरिंग इन मे वो आप कह रहा है ही टेस्टिफाइड टू दिस कि मेरी अपनी प्रोडक्ट अगर असी इनू प्रॉपरली नहीं कंट्रोल किया रेगूलेट किया अगले साल का इलैक्शन का तो फर्क पैना ही है बट उस तो वध की कुछ होर माड़ा हो सकता है सानू ये बारे अंदाज़ा भी नहीं हैगा टू सैम ऑल्टमैन's क्रेडिट यह CEO चैट GPT दे पेरेंट कंपनी OpenAI दा hundreds of lawmakers दे नाल लगातार मिल रहा है he is meeting with these lawmakers to come up with a strategy ताकि इस टेक्नोलॉजी नू किसी ना किसी तरह रेगुलेट किया जाए not control but regulate
ताकि एक दायरे दे विच सोसाइटी दे बेनिफिट लई अगे वधे और होर डेवलप होए। Right now that regulation doesn't exist. Maybe जो यह FTC दा केस हैगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aasmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।